joke of the day. This is, inshallah, a day will come that you guys will be a programmers, inshallah, in Python. So, inshallah, dua kijiye. Okay, objects in Python. This is very important. Objects are a way of organizing code in a program and breaking things down to make it easier to think about complex ideas. Like for example, देखें objects से आप define करते हैं, classes define करते हैं, आप objects से ये जिंदा चीज़ है या मुर्दा चीज़ है, तमाम की तमाम चीज़ें classification में आपकी help होती है. Like for example, a giraffe is a type of mammal, right? Which is an animal. A giraffe is also an animate object. Animate object, it moves. You can see it, you can touch it, right? It is alive. Now consider a sidewalk. Sidewalk यानी कि जो आप जो zebra crossing है आपकी, या जो आपकी footpath है, आप सब walk करते हैं, that's a sidewalk, right? Like that's non-animate object, right? It's not a mammal. It's not a non-living thing, right? It's a non-living thing. You can't touch it. You can touch it, yes, you can walk on it, but you can't. It doesn't move, right? So there's not so much about a sidewalk other than it's not a living thing, right? And it's an inanimate object. In other words, it's not alive, right? It doesn't move around. वो चीज़ें नहीं आगे पीछे move नहीं करती. The term mammal, animal, animate and inanimate are all ways of classifying things. इन तरीक़ों से हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं कि चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से हैं, so on and so forth, right? So that's how we define these things. And that's what objects are, right? It helps us in Python, like objects are defined by classes, right? Which we can think of as a way to classify objects into groups, right? Like for example, here's a tree, like let me show you a tree diagram, right? So things, उसमें inanimate things हैं, animate things, inanimate non-living things हैं और animate में living things हैं. Inanimate things में sidewalks हमने ले ली, हमने कार ले ली, हमने house ले लिया. These are all non-living things. और animate things में हमने animals ले लिए. Animal के अंदर एक और class है mammals. Mammals के अंदर आप giraffes रख सकते हैं, आप lion रख सकते हैं, आप तमाम की तमाम चीज़ें. So that's how you define a decision tree, right? आगे जाके decision tree भी इसी तरह आप बनाते हैं उसमें, and you define these objects. जब आप machine learning, deep learning और AI पढ़ेंगे तो objects play a very critical role. Because अगर आप कंप्यूटर को तस्वीर दिखाएंगे कि भाई this is a cat, ये बिल्ली है, this is qit, this is qalb, right? बिल्ली, कुत्ता अरबी में जिसे हम कहते हैं, this is हिसान, this is हमार, हाजा हिसान, हाजा हमार, मन हाजा वलद, यानी कि आप उसको बताएंगे कि भाई ये घोड़ा है, ये डोंकी है, ये लड़का है, और इस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे, राइट? So when you do that, that's the classification, and that's how it learns, right? That's how it learns. So this is just a basic example कि हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं. आगे जाके जब आप प्राइमर से आगे जब अल्फ़ा में जाएंगे तो थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशंस बनना शुरू हो जाएंगी. बट दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल फॉर यू कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके क्या चीज़ें आने वाली हैं. सो क्रिएटिंग अ क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? लाइक क्लास थिंग्स pass, that's how we type it in. Class inanimate things, pass. Class inanimate things, class. Class sidewalks inanimate, ये inanimate के अंदर जा रहा है, right? Pass. Class animals animate के अंदर जा रहा है, pass. So we are now, that's how you define things, right? If you run these things in Python, right? If you run these things, it will just go into its database के भाई चीज़ें जा रही हैं, and then if you run it, like, nothing will happen. Like indentation की मसला है, so we have to inundate, make sure कि सब तमाम की तमाम चीज़ें सही हो. Wait a minute. So you define pass, pass tab, and tab, right? So now Python ने सीख लिया कि भाई things is a class, उसके अंदर inanimate things हैं, उसके अंदर animate things भी हैं. Inanimate things के अंदर sidewalk है, animate things के अंदर animals है, एनिमल्स के अंदर मैमल्स है, मैमल्स के अंदर जिराफ है, राइट? अगर मैं एक और क्लास क्रिएट करूँ, ऐसे क्लास एंड देन मैमल्स, क्लास में हमने डाल दिया मोहम्मद फैसल, राइट? एंड देन वी से इट कम्स इन मैमल्स एज वेल, राइट? साइंटिफिक टर्म में, एंड देन वी से पास, राइट? एंड देन व्हेन आई रन इट, इट विल से कि ठीक है. Obviously बात है कि it's a, this is an invalid right now because we have to define all of these things, but in a way, right, that's how you
go about in terms of defining these things. I think नाम जो था मैंने underscore करके मुझे use करना चाहिए था. That was the reason it was picking up a mistake. Then we run the code and now it is picking up and say okay मोहम्मद फैसल mammals में आता है. इसी तरह आप अबू बकर अब्दुल्ला तमाम लोगों को इसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं. They are in the within the mammals there are companions, there are prophets, right? There are other human beings. Prophets and companions, they come on the top, and then so you can define these things, right? That's the whole idea of defining these things. So let's go back. So adding objects to classes, right? Like Kamu equals giraffe. So हमने अब giraffe का नाम रख दिया Kamu, right? So there was a kid when I was जब मैं बच्चा था छोटा था तो मैं हमारे मोहल्ले में एक बंदा था जिसने पता नहीं आई थिंक बिल्ली रखी थी, इसका नाम कामू था. सो एनीवे सो you can classify that as a giraffe or you can classify that as whatever you want, right? So the point is that that's how you keep on adding objects, right? Again, just get the idea, just get the sense of it. You don't have to worry about all of these things because आगे जाके हम इसके quizzes, assignments, projects करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी. मकसद हमारा वही है कि आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे पाइथन आ जाए कि आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी में इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें इंशाल्लाह. Defining functions of classes. Now functions are a way to reuse the code, obviously, as we told you, right, in the previous lecture 104. So when we define a function that is associated with a class, we do so in the same way that we define any other function, except that we indent it beneath the class definition. For example, here's a normal function that isn't associated with a class, right? So we say by define this is a normal function. Print I am a normal function, right? And then class, this is my silly class. And I say define this is a class function. Print I am a class function and define this is also a class function and then print I'm also a class function. So these are defining functions within the classes because that makes the code easier to do and easier to use, right? So हमें multiple lines लिखनी नहीं पड़ेंगी and we can keep on moving forward in terms of defining and moving forward, so on and so forth, right? So that's the whole idea inshallah. Adding classes, class like उस class के अंदर मुख्तलिफ characteristics भी डाल सकते हैं. जैसे animals हैं, animals breathe, move, eat food. Mammals feed young with milk, right? Giraffes eat leaves from trees. अब mammals के अंदर हम लोग जैसे अगर हम एनिमल की पूरी कैटेगरीज देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट अदर कैटेगरीज एज वेल. वी कैन पुट ऑन सम मोर देयर आर कैटेगरीज ओवर हियर एज वेल. वी कैन पुट इन रेप्टाइल्स, हम रेप्टाइल्स डाल सकते हैं, हम इसमें बर्ड्स की स्पीशीज़ को डाल सकते हैं, हम सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो द पॉइंट इज के आप इसमें यू कैन कीप ऑन डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? इट फ्लाइज, इट डजंट फ्लाई, इसके चार पाँव हैं, इसके चार पाँव नहीं हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो द पॉइंट इज के within a class, within objects you can define classes, within classes you can define different characteristics and different characteristics के अंदर जो है आप उसको मुख्तलिफ चीज़ें दे सकते हैं, right? So that's the whole idea, just to make things easier for you, right? Defining function of classes, right? So let's move on inshallah to the next one. Again देखें इसमें मैं बताया class animals animate and then define breathe self pass, definition move self pass and definition eat food self pass, right? So we are उसको हमने मुख्तलिफ और मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया कि भाई हम इस तरीके से हम इसको और भी बता रहे हैं कि भाई एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं, राइट? सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के आगे जाके ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्लासेस आएंगी, फंक्शन आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. हाउ कैन यू डू दैट, राइट? जब आगे जाके जब आप बहुत एडवांस लेवल पे 6 से 9 महीने के बाद जब आप मशीन लर्निंग का कोड देखेंगे, जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यू कैन सी अच्छा यार इसमें ये इसकी क्लासेस हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ताकि आप यू डोंट हैव टू स्क्रैच योर हेड के यार अब सर को जा रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ. द पॉइंट इज़ के आपको पता होगा कि भाई क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर आपने इसमें मजीद और कैरेक्टरिस्टिक्स डालने हैं, आप उसको और डाल के अपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आप उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग डेटा एनालाइज कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ डाल सकते हैं कि जो कौन से लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कितनी देर से शॉपिंग करते हैं, किस टाइम पे शॉपिंग करते हैं, जिस टाइम पे शॉपिंग कर रहे हैं उनका डेटा अलग कर दिया जाए. अगर सुबह के टाइम जो शॉपिंग कर रहे हैं उनका डेटा अलग कर दिया जाए. लोगों ने अपनी एज डिफ़ाइन की है तो यंग जनरेशन कितनी है, मिलेनियल्स कितने हैं,
so on and so forth, right? So you define all of these characteristics and then you keep on moving forward, right? So that's the example of marketing data. But then again, अगर आप accounting में कर रहे हैं या accounting forensics कर रहे हैं या computer forensics कर रहे हैं, you can define the same characteristics to the same concept of utilizing these classes and objects and characteristics, so on and so forth, right? So why use classes and objects? As I said, we have now added functions to our classes, but why use classes and objects at all when you could just write normal functions called breathe, move, eat, food, and so on, right? I mean, basically you have to define, when you create an object, you can say कि भाई वो run कर रहा है या वो चल सकता है या उसकी क्या class है. You have to define keep on creating a parent class and a child class and a sub-child class, so on and so forth, right? Otherwise, अगर आप कंप्यूटर से या पाइथन में, अगर आप पाइथन में ऐसे ही किसी से पूछें कि भाई कि इस चीज़ को डिफाइन करो, इफ इट डजंट नो इट एग्जिस्ट इन द क्लास, इट विल जस्ट स्किप दैट. इट से कि भाई आई डोंट नो व्हाट दैट इज, राइट? सो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई के अंदर कोड रीयूज सबसे ज़्यादा होता है, एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द क्रिटिकल थिंग बिकॉज दैट्स व्हाट मेक द एल्गोरिथम स्मार्ट, राइट? सो आगे जाके जब आप करेंगे इसमें इंशाल्लाह, देन यू विल नो मोर कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, वी कैन टेल पाइथन एग्जैक्टली कौन चीज़ जिराफ है, कौन चीज़ ज़ेब्रा है, कौन चीज़ लायन है, कौन क्या करता है, कौन हर्बीवोरस है, कौन कार्निवोरस है, कौन गोश्त खाता है जानवर, और कौन सब्जी खाता है, कौन ओमनीवोरस है जो दोनों खाता है जैसे हम ह्यूमंस हैं, राइट? सो यू डिफाइन दीज थिंग्स एंड दैट्स द ओनली वे इट लर्न्स, राइट? जैसे आप जब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में काम करेंगे, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एल्गोरिथम जिससे आप देखना चाहें, ये एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर भी आएगा. मैं पाइथन की अलग से एक छोटी सी क्लास करूँगा जिसमें आप अपने एल्गोरिथम्स डिज़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने फेशियल रिकग्निशन का एक प्रोग्राम बनाना है, राइट? फेशियल रिकग्निशन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने उनको बताना है कि भाई तस्वीरें सबकी ली जाएं और तमाम डेटाबेस से पीछे मैच किए जाए, राइट? सो वो फेशियली कैमरा जो है वो सबकी तस्वीरें कैप्चर कर रहा है, राइट? एंड इट विल स्टार्ट कैटेगराइजिंग. नाउ वो उसके पास डेटाबेस में पीछे डिफाइंड हुआ है कि कुछ लोग जो पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ चुकी हैं, पुलिस या जो भी है, तो उनका ऑलरेडी डेटाबेस पीछे है. सो व्हाट इट हैपेंस इज कि वो उसकी तस्वीर मैच करके दिखा देंगे कि भाई ये दिस इज़ एन पोटेंशियल फैलन और यूज्ड टू बी एन एक्स फैलन. फैलन मीन्स के उर्दू में इसको क्या कहेंगे कि ये मुजरिम तो नहीं कहेंगे, आई थिंक के ये पुराना क्रिमिनल है, राइट? इसने गलत काम पहले किया था, ये पकड़ा जा चुका है. जब आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे या जब आप JFK पे यूएस में या यूएस के बॉर्डर में जब आप इंटर होते हैं या यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, यूके में या कनाडा में जाते हैं, दे यूज़ दीज फेशियल रिकग्निशन प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन यूज़ करते हुए, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लासेस सब डिफाइंड हुई हुई हैं, और वो पीछे क्रिमिनल डेटाबेस से उठा के तस्वीरें मैच कर रहे होते हैं, कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, और पोटेंशियल आदमी इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई कि नहीं की हुई. दैट्स व्हाट दे यूजिंग, एंड दे आर यूजिंग दीज इनहेरिटेड फंक्शंस यूजिंग अ लार्ज डेटाबेस, राइट? अगेन देखिए, मैं आपको बहुत आगे की चीज़ बता रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि जब अगर आप ये चीज़ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी तो आप आगे जाकर इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हुए इंशाल्लाह सक्सेसफुली अपना ही प्रोग्राम बना सकते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिसमें हम खुद भी काम कर रहे हैं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के पाकिस्तान में तमाम का जो डेटाबेस है नादरा के पास मेंटेन हुआ है, राइट? तस्वीरों के साथ बायोमेट्रिक रिकग्निशन, तस्वीरें सबकी ली हुई हैं. सो अगर किसी के CCTV कैमरा में घरों में वीडियो लोग बना रहे होते हैं, अक्सर लोग दिखा रहे होते हैं, फेसबुक पे इधर सबकी वीडियोज़ आ रही होती हैं. अगर कोई गलत पोटेंशियल काम करते हुए पकड़ा जाता है, वो वीडियो वो आप हमें अलनाफे को दें, अलनाफे कैन रन दैट थ्रू द नादरा डेटाबेस, राइट? सो तो हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम होगा उस तस्वीर की, वो CCTV के फुटेज में जिस बंदे की तस्वीर निकालेगा, उसका एक बायोमेट्रिक सिग्नेचर डिफाइन करेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट ट्राइंग टू मैच इट अप विद द डेटाबेस ऑफ नादरा, जो कि उसने पहले से स्कैन करके रीड करके एक डेटाबेस बनाया हुआ है. सो इट विल स्टार्ट मैचिंग अप द पिक्चर विद द बेस्ट पॉसिबल मैच, राइट? और वो बता सकेगा कि भाई ये बंदा जो है, इसका नाम जो है वो परवेज़ है, फॉर एग्जांपल, राइट? सो ये परवेज़ मुशर्रफ जो है, इसने गलत काम किया था, फॉर एग्जांपल, राइट? या अल्ताफ़ हुसैन, या ये अल्ताफ़ हुसैन है, या ये नवाज शरीफ है, राइट? या ये जरदारी है. अगेन इट हैज़ नो हैज़ नो सिग्निफिकेंस, बट द पॉइंट इज़ कि अगर कोई भी गलत लोग हैं
वो डिफाइन कर सकता है. एंड लेट्स थ्रो इन इमरान खान इज इन देयर एज वेल कि ये इमरान खान है. इट विल से कि हाँ ये इमरान खान है, इमरान खान ने ये ऐसा काम नहीं किया या वो करने वाला है, जो भी है. द पॉइंट इज के पाइथन का जो प्रोग्राम होगा, it will work as a middleware between the CCTV video and the database at Nadra, and it can match up these things, right? That's how it works. That's how it works. This is so unique, right? So it can also use these functions. So for example, yeah, inherited functions भी इसमें defined होंगे. Animals breathe, move, eat, food, and mammals जो हैं, I can also use those functions क्योंकि मैं ये सब काम करता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, right? So on and so forth. So that's how we do it. Functions calling other functions, हम उसको भी कर सकते हैं कि जैसे आपने पीछे देखा कि भाई डिफाइन हुए हैं फंक्शंस, they can call other functions to get more useful, and that's how the program is designed, right? Definition जो उसका concept होता है framework, that's how we define the programs. But आगे जाके जब आप देखेंगे, you can make these programs quite easily. Obviously इसमें बड़े codes and lines of codes होते हैं, but you don't have to reinvent the thing. ये बहुत सारी चीज़ें पहले से available हैं. You have to be smart enough to basically figure out कि भाई कौन सी चीज़ किधर से, input कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस कहाँ से इसको मैच करना है, आउटपुट कहाँ पे देना है. यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इससे हम लोग ना फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ सकते हैं, इससे हम लोग मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, इससे हम लोग प्रिडिक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, वेदर पैटर्न्स को देख सकते हैं. बहुत बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए, फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस एंड कॉलिंग objects, classes and define. So that's what makes the algorithm unique, right? That's how we define an algorithm. So आगे जाके एक advanced class जब आप आखिरी जेटा लेवल पे होंगे तो फिर हम करवाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि भाई आप अपने algorithms कैसे define कर सकते हैं. So sometimes when creating an object, you want to set some values, right? Also called properties for later use. And when we initialize an object, we are getting it ready to be used, right? So that's how we do it. Initializing an object as well. Again, इसकी जो coding examples होंगी वो आगे जाके आप करेंगे. This is just an introductory class to make sure कि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हों. अल्फ़ा क्लास में आपकी कोडिंग और आएगी, असाइनमेंट्स आएंगे, क्विजेज आएंगे, बेटा में और ज़्यादा होगा. इस तरह होते होते इंटेंसिटी बढ़ेगी. बट द पॉइंट इस कि ये जो क्लास है ये इस तरह डिज़ाइन हुई है कि क्लास 5 का बच्चा भी अगर आप दिखाएं इसको, जिसको पढ़ना लिखना आता है और वो उर्दू और इंग्लिश समझ सकता है, तो वो ये चीज़ें समझते हुए काम कर सकता है. नाउ दीज किड्स आर वेरी यूनिक बिकॉज अगर ये अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, राइट? तो दे कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. एज आई सेड लास्ट टाइम के हर पाकिस्तानी के अंदर ना एक मैगाइवर है. अगर आपको नहीं पता है मैगाइवर कौन है, गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च ऑनलाइन यूट्यूब, राइट? इट्स अ वेरी ओल्ड शो जिसमें बंदा जहाँ पर भी कहीं फंसता है ना तो ही नोज हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन. सो अगर हम इन बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं, पाइथन की प्रोग्रामिंग सिखाएं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की चीज़ें सिखाएं, साइबर सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें, सो दे नो exactly how to get out of that difficult situation by utilizing these different smart algorithms जो अपनी creativity यूज़ करते हुए बना सकते हैं इंशाल्लाह. So that